Good evening, everyone. And we have assembled here today to kickstart our understanding of how exactly to tackle the first question in your paper in section A. Now, section A in AAA somehow turns out to be a very predictable part of the exam because they have a fixed set of parameters that they are going to test you on. सेम चीजें हैं, उसी पे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा. And the syntax also is very clearly given to you. What you are expected to do is also therefore very clearly defined. Now, when I talk of section A, let me share my screen with you. See, when I talk of section A in your AAA exam, section A is case study based. It's a long case study. Okay, sometimes it runs up to at least 5 pages or five. I mean, if you were to put it on a full scape sheet, it would almost be like 4 to 5 full length full scape sheets. That is the length of your answers in the that is the length of the question or the background case study in your AAA paper. Now, the interesting part about it is that it contains almost or it covers almost the entire syllabus. Okay. Now, you know your AAA paper is split into two parts, section A, which is for 50 marks, and section B, which is for 50 marks. In section A, there are 40 technical marks and then there are 10 professional skill marks. Now, the case study is set at the planning stage of the audit. Okay. And one mainstay in these answers is going to be the risk element. ठीक है. तो इसमें there are 40 technical marks, so 80% are technical marks, and then there are 20 professional skill marks. So it starts with one comprehensive case study containing 4 exhibits. The question has an email from the audit engagement partner, and it outlines the specific requirements that the audit engagement partner wants you to address. Now, how do or what kind of data is usually given to you? See, this is a 5 page long detail that will be given to you, which means you will have to constantly juggle between different requirements that are expected. First step that you should do in a section A question is that you should read the requirements. Those requirements will often give you an idea ki what is the information that I should be on the lookout for. Okay. Now, the risk part is going to be there in every paper. Out of 40 technical marks, आउट ऑफ 40 टेक्निकल मार्क्स आप अज्यूम करके चलो कि मिनिमम 20 to 25 marks is going to be on risk. And there are three specific risks that they test you on. The first one is business risk, second one is audit risk, and the third one is the risk of material misstatement. Minimum 15 marks से लेके maximum 25, in some cases even 30 marks are uh, allocated for risk. और ये तीनों में से यूजुअली दो रिस्क तो आते ही हैं. Now, why is risk such an important part of this question? See, the question is set at planning stage. अभी तक आपने काम शुरू नहीं किया. You are planning on how to approach the audit. So, you should think also in that way कि यार अभी I have this information. The partner has sent me an email and he wants XYZ details from me. So, how do I, before I perform any procedures, before I actually get down to collecting evidence, I have to plan the entire audit process. So, it has to be a forward looking approach. Now, as I said, there are three types of risks that are tested in section 1. One is business risk, threats to the entity's ability to achieve its objectives and execute its strategies, or anything which could ultimately lead to closure of the business, anything that could damage the reputation of the company. So all of these are what? All of these are business risk. कि ठीक है, ये anything that can, for example, a company is operating with a license. That license is for mining or that license is for food production. And the company is delivering food containers to different customers और किसी के food में कुछ insect मिल गया. ठीक है. Now that person would have launched a case against the company, and if things go ahead, there is a possibility that the business will shut down. Why? Because the license that was given to you for operation, that license may be revoked by the licensing authorities. That is a business risk. Or uh, products that you have sent out. They say, couple of years ago,
not a couple of years ago, actually a very long time ago, there was a car manufacturing company. The cars that it was dispatching to its customers, उसमें कुछ wiring का issue था या some issue was there, and the cars were auto combusting. वो खड़े खड़े कार को आग लग जाता था. So naturally, if that happens, the company will be involved in so many legal actions and suits that वो बंद करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा business. So the company, that was a business risk कि यार ये cars के साथ ऐसा problem हो रहा है. ठीक है. So anything that might potentially lead to closure of the business, or anything that might lead to closure of the business, or that could damage the reputation of the business, or something that could stop you from achieving your objectives, that is business risk. The second part of this is the audit risk. Audit risk matlab auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. ठीक है. अब financial statements contain a material misstatement, and the auditor is unable to identify that material misstatement. He expresses an opinion that the financial statements do not have any material misstatement when in fact that issue is there. So audit risk में आपका detection risk भी आएगा, आपका inherent risk भी आएगा, and आपका control risk भी आएगा. Risk of material misstatement, that the is basically the risk that financial statements contain material misstatements before the audit is conducted. इसमें see, whenever the question is on risk of material misstatement, you should look at the financial statement assertions basically. uh, is valuation हो गया, measurement हो गया, then presentation, disclosure, existence, occurrence, rights and obligations, ये सारे assertions, and of course disclosure is also a very important part. जो disclosures SBR में important नहीं थे, those disclosures will be important here. ठीक है. Now you should see, whenever you are looking at the risk element, business risk का I told you कि what could be the issue. Audit risk and risk of material misstatement में there is a significant amount of overlap. ठीक है. So when you are framing those answers, you should see कि यार when you are doing this particular, when you are say for example looking at PPE, and the company has changed its has changed the useful life of the asset, 3 years का 30 years कर दिया, तो you should start with कि this is a change in accounting estimate and blah blah blah. Don't talk about procedures, but you should mention कि useful life increase हो गया तो depreciation कम हो जाएगा, and expenses will be understated, profits will be overstated, assets will also be overstated. तो specifically financial statement impact के बारे में you will have to talk when you are talking about audit risk and risk of material misstatement. Now, a lot of your questions will often ask you to prioritize the audit risk. And when the question is asking you to prioritize the audit risk, आपका जो कमर्शियल एक्यूमेन वाला स्किल है ना, दैट स्किल इज गोइंग टू कम इन हैंडी हियर. नाउ how do you decide whether a particular risk is high risk or low risk, or how do you prioritize basically? सबसे पहले कीप अ थंब रूल कि it अगर गोइंग कंसर्न इशू है, ठीक है, गोइंग कंसर्न इशू है, कंपनी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ द कंपनी वर अ गोइंग कंसर्न. अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो दैट शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क, बिकॉज गोइंग कंसर्न इशू टॉक्स अबाउट इफ दैट डजंट वर्क आउट तो कंपनी बंद हो जाएगा, राइट? सो गोइंग कंसर्न इशू शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क. उसके बाद व्हेन यू आर लुकिंग एट अदर आइटम्स, एक जनरल रूल that you have to keep in mind is कि say you talk about change in useful life, 3 years का 30 years कर दिया, तो because of that depreciation का impact is say for example 20 लाख रुपीज. तो आप वो अमाउंट लिखो, ठीक है. सारे के सारे मिस स्टेटमेंट्स का यू राइट डाउन द क्वांटम ऑफ द मिस स्टेटमेंट, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा, दैट इज द हायर इम्पैक्ट रिस्क. सो व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट. डेप्रीसिएशन का 20 लाख, ग्रांट का 1 करोड़, किसी और का 10 करोड़, जहां पे द अमाउंट इज हायर, दैट रिस्क विल रैंक हायर. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. सो दिस इज, आई वुड से, अ rudimentary approach to prioritization of risk. When we see questions, we'll of course have to look at facts of the case to decide, but पहले going concern, and then जहां पे
amount zyada, that risk ranks higher, because you will have to write the risks in the order of that particular वो priority में आपको लिखना पड़ेगा वो. So high impact risk first and low impact risk later. Now, in a lot of cases, see, related party disclosure is a risk with respect to non-disclosure as per IAS 24. But related party transactions play a very important role when you are analyzing the financial statements, right? उसमें misstatement मतलब the users of financial statements are getting misled. So that will again rank higher. ठीक है. Now, when you are, one part of the question will also focus on audit procedures. ठीक है. But before going to that, remember one thing, ये जो risk वाला element है ना, risk वाला element is anywhere going to be tested for minimum 12-15 to maximum 25-30 marks. तो आपका पूरा मार्क्स जो आपको उठाना है वो आपको रिस्क एरिया में ही उठाना है. ठीक है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स. यहाँ पे जो प्रोसीजर्स है, or these are of course your skill level ka substantive procedures that is getting built upon further and further. Procedures could be tested for 5 to 8 marks. Procedures will usually be about one area in the exhibit only. जैसे inventory related पूछ लिया या leases related पूछ लिया. Now you should be very clear in terms of how you are framing the procedure. One rule of thumb that I keep in mind is, आप प्रोसीजर फ्रेम करते समय थिंक अबाउट टू थिंग्स. वन थिंग इज थिंक अबाउट द रिस्क. इन दिस पर्टिकुलर एरिया व्हाट इज द रिस्क. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कैश. कैश में रिस्क है थेफ्ट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश. ठीक है. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में बहुत सारा रिस्क है. ठीक है. वन रिस्क इज दैट द inventory which is not your inventory is included in the year end inventory count. अब ये कब हो सकता है? For example, you are, there is a bill and hold arrangement. Bill and hold arrangement में sale transaction is complete because all the conditions are fulfilled. Netra came to me, she identified a TV, but she did not take delivery of TV. मेरे गोडाउन में 30 TVs है, but one of those TVs does not belong to me, it belongs to Netra. What is the risk? Inventory belonging to someone else is counted as my closing inventory. I did not pay attention to the fact that there is a bill and hold arrangement. भले ही this one TV is in my godown, it is not my inventory, it is Netra's inventory. तो वो एक रिस्क है. इन्वेंट्री में अनदर रिस्क कुड बी दैट मटीरियल हैज बिन डिस्पैच्ड. ठीक है. मटीरियल इन ट्रांजिट है. If material is in transit, it has, what should you do about it? You end up including that in the closing inventory or it exits your system. Now, यहाँ पे you will have to think about facts of the case. For example, if it is free on board, if it is a free on board Incoterm, तो उसमें क्या होगा? The moment I load the inventory on the ship or cargo, at that moment the control passes out of my hand. It passes to the customer immediately. So the moment मैंने ship पे माल चढ़ा दिया, it is not my inventory. The risks and rewards get transferred to the customer. Control goes to the customer. There could be another arrangement where it is CIF. ठीक है. अब CIF में when will the control pass on to the customer? When the material is delivered to him. So आपको see, your exam will never contain terms like FOB, CIF and all of that, because these are specific Incoterms. But question में दिया रहेगा कि यार material has been dispatched या consignment inventory का data होगा कि I have transferred goods on consignment basis to Mayank and I don't include those in my closing stock, when in fact Mayank does not have control of those goods. So although physical custody is with Mayank, it should be included in my closing stock. तो ये risk है, ये inventory specific risk है. So whenever you are framing procedures, first step that you should think about is कि ये area में क्या क्या risk हो सकता है. ठीक है. Make a mental note of those risks. Second thing that you should do is कि what are the financial statement assertions involved. To give a very simple example, uh, existence is a financial statement assertion. ये पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं. क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertion. Valuation is a financial statement assertion. You want to verify whether investment property has been uh, recorded at its appropriate value. Check करो. What is the accounting policy? Do you use the historical cost basis or do you use the fair value basis? Fair value basis if you are using, तो आप क्या check करेंगे? You will check whether
a report from a registered valuer was obtained, uska competence, uska experience for verification of that value. You will check whether that report is dated close to the date of financial statements. So for every single assertion that affects that item, you will have to frame a procedure, and procedures will also have to be framed keeping in mind the risk associated with that particular item. When we do questions, naturally this will come in a little more handy. अब जो सिनेरियो है, ट्राई टू लिंक इट टू द असर्शन इन्वॉल्व, एंड अब आपको एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है. कॉमन सेंस, यू विल गो टू द प्रेमाइसेस एंड चेक कि यार इधर इन्वेंट्री है कि नहीं, इधर व्हीकल है कि नहीं, फिक्स्ड असेट है कि नहीं, राइट. सो दैट इज हाउ यू आर वेरीफाइंग द असर्शन. फिर assertion of existence. Say for example, you are checking depreciation. आप कंपनी का डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेक करेंगे. यू विल सी वेदर यू विल recalculate the depreciation just to be sure. That could be another procedure. Then you will see whether accounting entry has been done correctly. You will see whether opening closing balances ka reconciliation has happened, right. Now so procedures to आपको situation to situation we'll have to frame. We'll be doing enough number of questions for us to get a grasp of how framing of procedures is supposed to be done. The third part is there could be some other professional issues that are tested in the question. Sometimes the question might be on ethics, where they might ask you to comment on ethical and professional issues. In some cases the question could be on quality management, and I think हमने अभी section B में questions किए हैं on quality management for you to get an idea on how to frame the answers. And then it could something could be with respect to money laundering, fraud reporting, regulatory compliance, उसके related भी हो सकते हैं. But procedures are a must in every question. एक 5 to 8 marks procedure आएगा, 20 से लेके 30 मार्क्स तक का रिस्क आएगा, एंड देन रिमेनिंग पार्ट दैट यू हैव, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ दीज इश्यूज. नाउ रिमेंबर, द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स यू, ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन में दे एक्सपेक्ट यू टू प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स. अब आपको हेडिंग देना है ब्रीफिंग नोट्स एड्रेस टू द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. आप उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दो, आपको कम्युनिकेशन स्किल का 1 मार्क मिल जाएगा. सो टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट डालो, ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्रिएटिंग दिस फॉर्मेट अर्न्स यू 1 मार्क. उसके बाद अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग टू द पार्टनर, ठीक है. पार्टनर एक सीनियर लेवल रिसोर्स है, आपके ऊपर है वो. You are a manager, he is the partner. So when you are framing the briefing notes na, वहां पे please don't explain what is impairment. If your risk is that impairment of assets has not been correctly recorded, straight away talk about the risk. Don't spend 2 lines explaining him कि you know what is impairment. When carrying amount is greater than recoverable amount, that is impairment. अरे वो partner है, उसको तुमसे ज्यादा आता है. तो if you do this time pass, you will lose communication skill marks. ठीक है. सो लैंग्वेज एंड टोन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ यू. आई हैव मेड दैट स्पेसिफिक नोट इन द फीडबैक. लैंग्वेज इज बिकमिंग कैजुअल, लैंग्वेज इज बिकमिंग कैजुअल. 2 लोगों के केस में मैंने ये स्पेसिफिकली नोटिस किया है. आई थिंक आई हैव, मैं अपने ही बच्चे हैं सब. आई थिंक हर्षा एंड विजय, 2 केसेस में मैंने स्पेसिफिकली, मुझे याद है, आई हैव रिटन इट इन द फीडबैक कि लैंग्वेज इज बिकमिंग कैजुअल. प्लीज डोंट डू दैट. यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनल लैंग्वेज, अदरवाइज यू विल लूज कम्युनिकेशन स्किल मार्क्स, ठीक है. एंड कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, डोंट मेक देम वेरी लॉन्ग. हेडिंग दो, सब हेडिंग दो, उसका भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है. एंड when you present it in the order that they have asked, you start gaining those marks. Then, see, in question 1, all the 4 professional skills are going to be tested. Communication के लिए format, language, tone, proper presentation. ठीक है. Commercial acumen के लिए when the prioritization of risk is asked, और हर पेपर में एक क्वेश्चन में रहेगा prioritize the risk, you will get commercial acumen marks for that. Then understanding the business context and then identifying the audit risk that way, that will fetch you some more marks. I think Moosewood Hospital में हमने देखा था yesterday that their inventory is medical inventory, and medical inventory getting expired is a big risk as compared to some other inventory getting expired. So when you emphasize on this part, that automatically gains you commercial acumen ka marks, because your answer is not a generic answer. Your answer is framed according to the situation that is in front of you. And whatever audit you have studied in the last 1 month, when you apply that to the given scenario, that is what gains you the commercial acumen ka marks.
ठीक है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, when you identify the relevant risk and assess their implications for audit strategy, when you quantify the impact of that particular misstatement or that particular risk, you explain why that is a risk. See, whenever you are talking about risk, because ये हर पेपर में आएगा, you cannot see, एक आपको basic syntax follow करना है. Don't just jump into explanation. First of all, identify the risk कि प्रॉब्लम क्या है. स्टेट दैट इन वन लाइन कि ये हो सकता है, दिस इज द रिस्क, दिस इज व्हाट कैन गो रॉन्ग. व्हाई डू पीपल लूज मार्क्स? बिकॉज दे राइट इन अ हैphazard मैनर. पहले इम्पैक्ट लिखेंगे, फिर रिस्क आइडेंटिफाई कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे. They will not quantify, they will not link it to the overall scenario. First of all, identify the problem, then explain why that constitutes a risk. For example, increasing the useful life of the asset randomly, why is that a cause for risk? Please explain that. Make sure that you quantify. Quantification can happen before explanation, that's okay, उसमें आगे पीछे चलेगा. And then of course connect that with the overall scenario. See, these cannot be surface level observations. आपको हर चीज में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका कनेक्शन लगाना है कि why is this a problem, then quantification, and then integrate it with the scenario. Now, in every question that involves audit risk and risk of material misstatement, ठीक है, business risk में करने का जरूरत नहीं है, but whenever the question involves audit risk and risk of material misstatement, you will have to specifically write two paragraphs on materiality. First paragraph होगा where you are determining the materiality level. See, now if it is a high risk for revenue, profit, and asset, three different thresholds or parameters for defining materiality: 0.5 to 1, 1 to 2, 5 to 10, ऐसा आपका materiality thresholds दिया है. Now, you should understand कि if it is a new audit client, naturally the risk is more, so materiality level should be set at the lower end of the spectrum. ठीक है. If it is a regulated entity, listed company है, so most of the cases में where पेपर में आपको हाई रिस्क क्लाइंट ही आएगा इन मोस्ट केसेस. ठीक है. 90% ऑफ द केसेस में द क्लाइंट इज गोइंग टू बी हाई रिस्क क्लाइंट. दैट मीन्स आप जो ये सेट करेंगे मटीरियलिटी लेवल, दैट हैज टू बी एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो स्पेसिफिकली कैलकुलेट करो, हाँ, वहां पे इन दैट पैराग्राफ एक्सप्लेन दैट. First, write down the materiality level has been set with respect to revenue of the company. उसका X percentage हमने लिया है. That is defining the materiality level. The next paragraph should be justification for that materiality. तो ये दो चीज अगर आप लिखेंगे, materiality level and justification of materiality, you will get 1 mark each. ठीक है. So दो फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे. And then of course, then you start talking about the risk of material misstatement. ये प्रॉब्लम आपको बिजनेस रिस्क में नहीं आएगा. बी वेरी केयरफुल, बिजनेस रिस्क में मटीरियलिटी लेवल नहीं लिखना है. ऑडिट रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट में यू हैव टू राइट द मटीरियलिटी लेवल. Knowledge of accounting standards is important. Things that are not asked in SBR will be asked in AAA. अभी हमने एक क्वेश्चन किया आज, राइट, जॉनसन कंपनी, उसमें IFRS 2 था. Accounting treatment was they had credited equity when in fact they should have credited liability for SAR. SBR में IFRS 2 आपके कभी किसी के पेपर में आया है? शेयर बेस्ड पेमेंट्स, गर्वित, मयंक, नेत्रा, आपके अटम में आया था? नो. नो सर। बट इसमें आएगा. IS 24 पढ़ा था SBR में? नहीं. पता है मुझे नहीं पढ़ा, इधर पढ़ना पड़ेगा. इन्वेंट्री, वहां पे तो मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ इन्वेंट्री, मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग देख लो. हियर इन्वेंट्री विल बी, एक तो प्रोसीजर्स में इन्वेंट्री आ सकता है, विच मीन्स यू नीड टू नो हाउ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन एंड एवरीथिंग. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन AAA आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन SBR. आई पर्सनली बिलीव दैट वे. अब ये सेक्शन A का जो क्वेश्चन है, वहां पे यूजुअली व्हाट ऑल इज टेस्टेड: syllabus area A, regulatory and legal environment, ethics, quality and practice management, planning and conducting audits. Planning and conducting audits तो सबसे important segment वही है. Now, I personally always advise the students whenever you are writing your AAA paper और SBL पेपर और APM पेपर, ये तीन पेपर में ना रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. AFM ATX में नहीं किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बहुत न्यूमेरिकली हैवी पेपर्स है, वहां पे चलता है. SBR में हाफ द टाइम यू ऑल्सो डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. बट AAA में
APM में and SBL में rough work is most important, because when you start, see, the question talks about risk of material misstatement, for example. When you start reading the data now, your mind also starts recording these things immediately. And when you are reading, you think of something कि हाँ ये भी risk है, ये भी risk है, ये भी risk है. By the time you reach the end of that paragraph, you have forgotten half of the things that you are supposed to write or you had in your mind. And by the way, those all are very good points. अच्छे points होते हैं, but you end up missing out on those points because you didn't make a note of them. See, there it can happen कि यार you noted a point because when you were reading the information you thought it was relevant. बाद में जाके यू रियलाइज यार ये इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है, सो इट्स ओके, आई कैन ड्रॉप इट। वो चलेगा ना, बाद में स्क्रैच आउट कर दो। बट आई वुड से इन सेक्शन ए स्पेंड 5 to 7 minutes ओनली ऑन रफ वर्क। पूरा आंसर आपके सामने आप मैप आउट करो। व्हेन यू मैप आउट दैट आंसर एंड यू मैप आउट द स्ट्रक्चर, इट विल गिव यू दैट स्टार्टिंग ऑफ, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वाज नीडेड टू बी कवर्ड हियर। ठीक है। नाउ दिस रफ वर्क एलिमेंट अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। एंड जब आप रफ वर्क करो ना, तो रिस्क के बारे में लिख लो। इन द सेंस व्हाट इज द रिस्क, why is it a risk, and what are the implications. Not testing goodwill for impairment, why is that a risk? Or not calculating value in use, why is that a risk? And when I say implications, आप specifically बोलो इसका financial statement पे क्या impact होने वाला है। ठीक है। So what is the risk, description of the risk, justification of why is that a risk area, quantum and implication। जब आप ये करेंगे तो you will, every risk that you describe has three components or other four components including the quantification। when you do that you will get your marks। अब जो बिजनेस रिस्क वाले क्वेश्चंस है, बिजनेस रिस्क वाले क्वेश्चंस अगेन दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब हम ऑफ कोर्स वील बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन बिजनेस रिस्क, नॉट राइट नाउ। जब हम एग्जाम किट सेक्शन ए का अप्रोच करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू A, identification. Identification has to be in one line. Okay. Identification cannot be a 4 line paragraph. 1 to 2 lines mein you have to identify the risk. Then the quantum, then the justification of why is this a risk. Suppose if you are talking about business risk, talk about risk resulting from significant conditions, events, circumstances, actions, inactions, flooding हो गया, hedging नहीं किया था तो suddenly your treasury department is exposed to risk. Then how does that impact the objectives of the business? Is it preventing you from achieving your objectives, and can it lead to strategic failure? ठीक है। Again, you don't need industry specific knowledge, but you have to refer to facts of the case. Okay. And when the question says evaluate, you will have to specifically point out towards the impact of that risk. If my license is taken away, my business will shut down. If I have over reliance on a single vendor and the single vendor shuts down or he increases the rates, my production cost will be affected. ठीक है। Now, if it is a risk relating to, say for example, IT control related risk होगा, या negative publicity about the company leading to a drop in share price, या newer products emerging into the market which can make your product obsolete, all of that has to feature in your answer। what you shouldn't do is facts given in the question को repeat करना is not fetching you any marks। ठीक है। now, extreme unlikely outcomes. I think all of us have a tendency to think about the extreme, right? आप overthinking तो करते ही हो, यहाँ पे please मत करना। Don't think about the worst thing that can happen. See, thinking about the worst thing that can happen is okay, but thinking about situations that are unlikely to happen. For example, you have your exam on so and so day, and there is an earthquake and your entire center gets plummeted into the ground। ये तो नहीं होगा ना। तो these kind of risks you should not include in your answers। ठीक है। make sure that whatever you are writing, you are going into the required level of depth।
In risk of material misstatement, it could be at the financial statement level or at the assertion level, which is why think about what can go wrong in that area plus financial statement assertion ke angle se what can go wrong. Then when we are talking about inherent risk, see there are certain items which by their very nature are susceptible to misstatement. So subjectivity, if there is a change in accounting policy very frequently, inherently that item is subjected to more risk. Or if there is estimation involved, if there is management bias involved, if there is complexity, for example आपका जो expected credit loss का calculation है in IFRS 9 financial instruments, ठीक है, in that particular part, that is automatically susceptible to misstatement because वहाँ पे there are complex mathematical models involved. So you should keep that in mind. You will have to think of the likelihood, the magnitude, and that will help you to decide which risk is significant and which is not. Probability जिसका ज्यादा है वो रिस्क ज्यादा significant है, ठीक है, जिसका क्वांटम ज्यादा है वो रिस्क भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है. So keep that in mind whenever you are talking about whenever you are commenting on the risk element in the financial statements. ठीक है. अब इस पे एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का मार्क्स कैसे मिलेगा? आई टोल्ड यू कमर्शियल एक्यूमेन का मार्क्स आपको प्रायोरिटाइजेशन एंड लिंकिंग दैट टू द बिजनेस सिनेरियो, उससे यू विल गेट दोज मार्क्स. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मार्क्स यू विल गेट व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई मैनेजमेंट बायस, कि मैनेजमेंट का ओपिनियन वेयर इज इट गेटिंग स्वेड बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल फीलिंग्स और maybe their preconceived notions. So that part you will have to talk about. Now, when we start doing section A, here's what I'm going to do. One question, we'll spend 2.5 hours. Section A के question को time लगता है, अपने को 2.5 hours लगेगा minimum. So Monday we'll do one question. Heart company I want to do on Monday. I'll see what timetable I have given, but ऐसे ही कुछ होगा. One question I'll do on Monday. One question I'll do on Wednesday. फ्राइडे को आई विल कंडक्ट अ सेशन वेयर वील कंपेयर द गुड आंसर एंड बैड आंसर, जो हम एसबीएल में करते हैं ना, कंपेयरिंग द गुड आंसर विद द बैड आंसर. वील डू दैट हियर इन ट्रिपल ए. Understanding where exactly do people lose marks and where exactly do they gain marks, that understanding is very important. उससे क्या होगा? उससे द कॉमन पिटफॉल्स, द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मेक. सो वील डू क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू ऑन आर ओन. क्वेश्चन थ्री विल फॉलो द पैटर्न दैट इज गिवन बाय एसीसीए. एसीसीए के वेबसाइट पे इट्स लाइक अ थरो डाइसेक्शन दैट दे हैव डन, कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. उसमें टाइम स्पेंड करेंगे. देन वील डू क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दैट. टू क्वेश्चंस वील डू ऑन आवर ओन. एक क्वेश्चन के लिए हम गुड आंसर बैड आंसर कंपेयर करेंगे एंड देन अगेन वील कम बैक टू सॉल्विंग क्वेश्चंस टुगेदर. सो दैट्स द आइडिया ऑफ सेक्शन ए विच वील बी इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. अभी सेक्शन बी को विल गिव अ बिट ऑफ अ पॉज. एक सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन अपना बाकी है सेक्शन ए में, सॉरी सेक्शन बी में, और अदर वन टॉपिक दैट इज लेफ्ट इज सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, राइट? तो दैट ऑल्सो वील डू, बट नेक्स्ट वीक आई वॉन्ट टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन सेक्शन ए. डज दैट वर्क फॉर यू? नहीं बोलने का स्कोप Yes. तो है नहीं ना वैसे, तो है ना, लेट्स डू इट दैट वे. और वीकेंड को आई हैवंट गिवन यू एनी होमवर्क ना, आई विल गिव यू समथिंग टू टाइप आउट, You मतलब told that to attempt the test one which you have sent on weekends. मत करो, डोंट डू दैट. आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू ट्राई. लेट्स गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है? Problem. फीडबैक फॉर दोज टू क्वेश्चंस अभी मंडे को मिलेगा. सैटरडे संडे यू नो हाउ इट इज, ठीक है? परफेक्ट देन, थैंक यू. रिकॉर्डिंग. सो लेट्स से हाउ टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ योर आंसर. ठीक है, त्रिशा एंड आई वर डिस्कसिंग कि महावीर नगर में खाने को अच्छा क्या क्या मिलता है. ठीक है. सो आई, हाउ people over explain. You know what? I wanted to eat something outside. So I called up Trisha. Trisha stays in Kandivali West. This is Trisha's address. Then when I called Trisha, this was her ringtone. Okay. She answered after four bells. When she picked up the call, and then giving a full description of address of every nook and corner, every shop, every location. So Trisha और मेरा जो 10 मिनट का conversation है, I have explained that in
50 मिनट्स पूरा स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डांस वांस सब डाल के मैंने उसको एक्सप्लेन किया. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट ना. आई स्पोक टू त्रिशा बिकॉज आई वॉन्टेड सम recommendations अबाउट गुड प्लेसेस इन कांदिवली वेस्ट. Trisha, who already stays there, knew about it, and hence she was the best person to answer that. These are the places she listed, these are the specialties, these are the timings when the store is open. If you want, you can go there and eat. काम हो जाता है ना इसमें. उसका बिगिनिंग, उसका बॉडी ऑफ द एसे, एंड ऑफ द एसे, त्रिशाज मूड, माई मूड, वेदर इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्या फर्क पड़ता है. नहीं चाहिए ना वो. आप काम की बात करो ना पेपर में. ये सब इधर उधर का मत करो. इट्स नॉट अ लिंक्डइन पोस्ट, राइट. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर लाइक्स. थैंक गॉड फॉर दैट. यू आर डूइंग इट फॉर टेक्निकल करेक्टनेस, तो उतना ही बात करो. ओवरडोज मत करो किसी चीज का. यू आर नॉट राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अनुपमा, प्लीज कीप दैट इन माइंड. Your audience is not that dumb. Your audience is mature, hopefully. So keep your answer that way. Don't explain every step कि 1 मिनट में मैंने 70 टाइम्स ब्रीद इन किया. नो. यू ब्रीथ, बस खत्म, लाइन एंड्स. ठीक है. और कैन आई टेक अ डे ऑफ, काम हो जाता है ना उससे. कैन आई टेक अ डे ऑफ बिकॉज माई सिस्टर्स कजन हु इज इंटरेस्टेड इन दैट. तुम छुट्टी ले लो, मैं दे दूंगा. डोंट गेट इन टू द डिटेल, राइट. सो अवॉइड डूइंग दैट. बाकी वेंस वी स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस, यू विल गेट मोर पर्सपेक्टिव. ठीक है. चलो. आप लोग तो कल आराम से उठोगे. मुझे करना है फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क सुबह सुबह. सेम क्वेश्चंस, आप तो एक बार करके आगे बढ़ जाते हो. मैं कितने सालों से सेम क्वेश्चन करता हूँ. आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप, फिट्स हैरिस कंपनी, लर्कशैल कंपनी, सेम क्वेश्चन. अब मुझे याद हो गया है कितनी बार क्या होना है उसमें. चलो आप लोग आराम से उठो, कल मुझे 7 बजे उठना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.